पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे साथ खास मेहमान है 2 टाइम्स नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर नागेश कुकनूर। इनकी फिल्में बहुत पसंद आती हैं मुझे पर्सनली, और अभी ये लेकर आ रहे हैं सीरीज द हंट विच इज अबाउट और बेस्ड ऑन वन ऑफ इंडियाज मोस्ट हाई प्रोफाइल केसेस, राजीव गांधी असैसिनेशन। तो क्या हम एक्सपेक्ट करें, हम ऑफ कोर्स नागेश से जानेंगे, बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट नागेश, अ वार्म वेलकम टू यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म। Glad to be here. ग्लैड टू टॉक टू यू बिकॉज आई बिन अ फैन ऑफ जिस तरह का काम आप करते हैं, चाहे आप फिल्मों में लाते हैं, सीरीज में लाते हैं, देयर इज अ सर्टेन इंटेग्रिटी टू योर स्टोरी। सो थैंक यू फॉर वन मोर टाइम एंटरटेनिंग अस। बट ट्रेलर इज ग्रिपिंग। एक दो एपिसोड्स के स्क्रीनर्स मैंने देखे हैं एंड आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि पूरी सीरीज में देखूं। बट फॉर पीपल हु हैव जस्ट वॉच्ड ओनली द ट्रेलर, नागेश, व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट? Well, as you mentioned, the story is based on Anirudhya Mitra's book 90 Days, और ये वेब सीरीज है 7 पार्ट्स की। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट ये सीरीज में कुछ पॉलिटिकल कनेक्शंस वगैरह नहीं है। इट स्टार्ट्स विद द असैसिनेशन, जैसा आपने एपिसोड्स 1 और 2 में देखा। It starts with the assassination and then it covers the 90 days. That's it. So इसको आप actually एक crime thriller बता सकते हैं. You can call it a police procedural. That's what people should expect. क्योंकि ये हमारे इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा लैंडशेड मोमेंट था when राइट। a prime minister got assassinated, but the people, that what happened post the 90 days was something nothing short of a thriller that Robert Ludlum back in the day would have written. It has so many twists and turns and that dramatic. So I want people to expect that. Yeah. राइट। राइट। बट you're right, because जब ये इंसिडेंट हुआ था, a lot of the younger generation wasn't even born then. I think उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन ली होगी उसके बाद मे बी गूगल से ली है। एंड when we were born, Correct. I was very little when this incident happened. So जो न्यूज में दिखाते थे हमें उतनी इंफॉर्मेशन है, and then we know the end result कि ये एक इंसिडेंट हुआ, this assassination, and then this was the end result. लेकिन ये जो 90 डेज का पीरियड था ऑफ getting us to that result, I want to know, how was this experience of bringing that? It was a huge challenge because this is a true story, right? Right. तो काफी लोग जिस इंसिडेंट के साथ जुड़े हुए थे वो आज भी जिंदा है. So I had to make sure that I dealt with it with a lot of sensitivity. I had to be very true to both the living and the dead. I couldn't just sensationalize this to suit my purpose. So if you see all throughout the series, I take a very clear neutral stance. माने Mhm. ये इंसिडेंट हुआ, an SIT team, special investigation team, was formed by the Indian government, और ये लोग assassins को hunt कर रहे थे. Right. So camera covers both the people. It covers the SIT team as well as the LTT who were involved in the assassination. So whenever जिस तरह के films या series या any kind of visual format मैं बनाता हूँ, मैं उस पे आई मेक इट अ वेरी स्ट्रांग पॉइंट कि लोगों को ह्यूमैनिटी के साथ दिखाया जाए. Mhm. एंड इन दिस आई वाज 100 टाइम्स मोर केयरफुल कि कोई फिंगर पॉइंटिंग ना करूं, बिकॉज at that time actually I'm I very clearly remember the event. But I was in the US, और जैसे आपने बताया, we would just get bits of information कि ये हुआ, they do breakthrough happened, ये वो करते 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 करते, but वो इतना टाइम लगा कि we all forgot about the incident almost till the Hmm. final result. और एक्चुअली अगर आप अनिरुद्धा मित्रा की बुक पढ़ेंगे तो यू विल बी शॉक्ड एट द ट्विस्ट एंड टर्न्स. आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, बट ये कोई थ्रिलर से कम नहीं है. Right. And these are all true events that happened. And अगर आप इंडिया की बात करें तो geographically it's a huge land, Yes. culturally it's a huge land, and because of that, language wise also it's one of those unique countries, because
एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट में जाएंगे तो इट्स समटाइम्स फील्स लाइक यू एंटर्ड अनदर कंट्री बिकॉज यू कांट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. So all these things played such a major part for the SIT that to actually track these people down was something phenomenal. करेक्ट एंड आपने जैसे कहा कि आपकी कोशिश रहती है टू शो द स्टोरी और द पीपल विद इंटेग्रिटी. हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू गेट ऑल दिस टुगेदर टू द शूट लेवल? तो कोई भी प्रोजेक्ट के लिए द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट इज द स्क्रिप्ट. एंड whatever I've made, I've either written it totally by myself या एक को राइटर के साथ. इस राइट. बार मेरे पास दो को राइटर्स थे बिकॉज जिस तरह की रिसर्च हमको करना था इट वाज मच लार्जर इन स्कोप. Sometimes it's not enough for one person to be able to dig through all this information. पर जैसे मैंने बताया सोर्स मटेरियल अनिरुद्ध मित्रा का बुक था. So राइट. we had a very good starting point with someone who was actively involved step by step during the hunt. So a lot of it we get as a first witness account. But most critical issue क्या था इस प्रोजेक्ट के साथ कि ये इंसिडेंट होकर 30 साल के ऊपर हो गए. एंड क्या होता है ये उन दिनों की बात है जब सिर्फ न्यूज़ चैनल दूरदर्शन था. तो बस आपके ऑडियो विजुअल न्यूज़ एक ही सोर्स से आता था. राइट. The journalists were many, print journalists, but it was that kind of factual, restrained reporting of the past. So while the facts are relatively accurate, the biggest problem is जब आप इसको dramatize कर रहे हैं तो आप कोई भी सीन सेट करते हो तो आपको पता है कि ये लोग मिले थे और मीटिंग का आउटकम ये था. पर स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट के बीच में बहुत कुछ होता है. तो दैट्स वेयर द राइटर्स कम इन. तो हमको सीन बनाना पड़ता है, सीन में डायलॉग्स लिखने पड़ते हैं. पर एवरी वर्ड एक्यूरेट तो हो नहीं सकता क्योंकि हम वहां पे करेक्ट. थे नहीं. पर वी हैंडल इट विद द बेस्ट सेंसिटिविटी पॉसिबल कि कैरेक्टर्स को ट्रू रखें. वी डोंट सेंसेशनलाइज एनीथिंग. एंड लाइक यू सेड द रिस्ट्रेंट कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट द एक्चुअल इवेंट्स वर सो एक्साइटिंग कि मेरे को ड्रामेटाइज करने की जरूरत थी नहीं. राइट. बस गेट द एक्टर्स टू प्ले रियल. वो तो मैं जो भी डायरेक्ट करता हूँ वो रियल स्पेस होता ही है. एंड देन लेट द इनक्रेडिबल ट्रू इवेंट्स टेक ओवर एंड टेल द स्टोरी. नो बट यहाँ चैलेंज डबल नागेश मुझे ऐसा लगता है आपके लिए था बिकॉज ए इट इज based on an event that happened. It is not something we are saying hypothetically, the 90s का era हमने create नहीं किया है. This is something that happened in India. करेक्ट. A and B, it is based on a book. लेकिन जब आप करेक्ट. उसको पर्दे के लिए बनाते हैं, so you have to take some kind of creative और artistic liberty. जैसे आपने भी कहा करेक्ट. कि you were not there, so करेक्ट. क्या dialogues हुए, क्या बातचीत हुई. नाउ टू मेंटेन दैट समथिंग जो एक तो रियलिटी में हुआ, दूसरा एक बुक से हम उसको अडेप्ट कर रहे हैं. हमें उसे ऑब्वियसली यू शोइंग इट फॉर द मीडियम जहां पर एंटरटेनमेंट एक क्रूशियल वैल्यू होल्ड करेक्ट. करता है. करेक्ट. वो कितनी सेंसिटिविटी के साथ आप करते हैं दैट पीपल ऑल्सो टेक अवे दैट ओके ये हुआ था इंसिडेंट एंड दिस इज द 90 days दैट टुक टू द हंट एंड आर ऑल्सो नॉट बोर्ड की अरे यार ये तो किताब जैसा लग रहा या तो वो एक टाइट रोप होता है एंड यू हैव टू वॉक इट केयरफुली. um मैं जब मटेरियल कोई भी मटेरियल टैकल करता हूं तो आई ओनली गो बाय माय इंस्टिंक्ट. देखिए फाइनल रिजल्ट जो ऑडियंस के साथ होता है उस पे मेरा एक पैसे का कंट्रोल नहीं है. है. राइट. आई कैन जस्ट टेल द स्टोरी एज ट्रूथफुली एज आई वांट टू. एंड जो मेरे माइंड में लगता है कि फैक्ट और एक्साइटमेंट के बीच ये सही बैलेंस है. अब वो किस तरह ऑडियंस के साथ रेजोनेट होता है ये मेरे कंट्रोल में नहीं है. बट आई एम कॉन्स्टेंटली एनकरेज्ड बाय दीज इंटरनेशनल शोज that have dealt with this stuff so well. One of my greatest examples is the Looming Tower. जो ये सीरीज बनी थी 9/11 के बारे में इतना मटेरियल है था
actual visual imagery hai with the plane striking, and still the looming tower gave us so many stunning, exciting details behind the scenes, जो हमें Right. बिल्कुल पता नहीं था. And I'm hoping that's what the series will do. I'm hoping कि जो इंसिडेंट्स एक्चुअली प्ले आउट हुए इस इन्वेस्टिगेशन में, ऑडियंसेस वो इनिशियली वो 1 और 2 एपिसोड्स में उसको देख करके दे गेट हुक्ड ऑन इट. एंड जिस Yes. तरह से ये इवेंट अनरावल होता है, इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ शॉकिंग. जो पहला ही एपिसोड देख लेगा, बिकॉज इट्स ऑल्सो फॉर पीपल जो उस जनरेशन में थे, इट्स काइंड ऑफ अ करेक्ट. रिकॉल के लेट्स सी, लेट्स अंडरस्टैंड कि भाई क्या हुआ था, एंड फाइनल रिजल्ट जो हमें पता है उस तक पहुंचने के लिए व्हाट वाज द प्रोसेस. हैविंग सेड दैट, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आपने एक रिसर्च की, आपने एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखी, टाइटली उसको बाउंड किया. बट ये एक्टर्स जो है, दे आर प्लेइंग पीपल हु वर देयर, दे आर नॉट फिक्शनल कैरेक्टर्स. वो प्रोसेस नागेश थोड़ा मुझे बताइए, हाउ वाज दैट इन सेलेक्टिंग द राइट काइंड ऑफ एन एक्टर फॉर इट, फॉर एवरी रोल, कितना भी छोटा क्यों ना हो, बिकॉज एवरीबडी इज रियल. Absolutely. So the most important, the first step that we followed was very clear कि visually वो लोग मैच करें. तो स्पेशली विद द टॉप की कैरेक्टर्स, जो राइट. एसआईटी के टीम के मेंबर्स थे वो लोग, एंड जो एलटीटी के प्राइम मेंबर्स थे वो लोग, इनको मैच करने में काफी टाइम लग गया. एंड तो नॉर्मली व्हाट वी डू इज वी हैव कास्टिंग डायरेक्टर, एंड उनके साथ वी मेटिकुलसली वर्क थ्रू. वो लोग सजेशंस भेजते रहते हैं, इनको ट्राई करो, उनको ट्राई करो, एंड फिर ऑडिशंस कंडक्ट करते हैं, सो ऑन सो फोर्थ. तो मैं 2 एग्जांपल्स देता हूँ, फिर वी कैन एक्सट्रापोलेट फ्रॉम दैट. एसआईटी के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे, एक्चुअली 3. कार्तिकेयन जो उनके लीडर थे, अमित सियाल प्लेज दैट रोल. राइट. Amod Kant, who was also a very, very important part of that team. Danish Iqbal plays that. And the third one is Amit Verma, played by Rahul Ved. So first, visually they have to match up, most importantly. अगर वो हो जाए, then we get into the business of how good an actor they are. So what was critical with uh, a character like Karthikeyan, and आपने 2 episodes में you had a chance to see him, is he was one of those perfect leaders in terms of the way he investigated. It was very quiet, no natak, man works with the facts. And even at the trailer, in the trailer, the last line is his, where he says, the impossible will take just a little bit longer, which is a राइट. great line, which he had as a saying behind his desk all the time. So, ओके. so it was pure luck that Samir Nair, who's the head of Applause, just randomly, I was looking really hard for some actor to play Karthikeyan. We tried different people, it didn't work out and stuff like that. And then finally he said, uh, did you consider Amit Sial? And I was like, who's Amit Sial? I didn't know Amit Sial. I hadn't seen Maharani and I hadn't seen Jamtara. Two of the things he's really well known for. And we looked, the images kind of matched each other. We said, हाँ, ये match हो सकता है. And purely, I was very close to the shoot. I went with my gut. And my God, was I lucky, because he is nothing short of amazing. The way he carries the whole team and to a certain extent the series, because he's just perfect as an actor. So करेक्ट. that worked out. So if you actually see the real Karthikeyan speak, it's very measured, very controlled. Things don't go out of. And Amit follows that totally. He never breaks out of character. Brilliant. One of the most important challenges was Amit Verma. Amit Verma was from the north, so his Hindi was perfect. But IPS cadre was Tamil Nadu. So he spoke and he spent a lot of time there. So he actually spoke Tamil. Amit Verma sadly passed away, so we didn't have a chance of seeing any footage of his or whatever. And through
the casting process, we got, I said Rahul with, sorry, I meant Silve. And my God, you know, he grew up in Salem in Tamil Nadu. So he speaks perfect Tamil. That's not Wow. Tamil that he prepared for the role. No, he speaks Tamil. And I couldn't believe it. And I grew up, I spent 7 years of my life in Madras and I went to a boarding school in Tamil Nadu. So I understand Tamil very well and I speak a little bit. So, can you imagine to get an important character like Amit Verma who spoke Hindi and who spoke Tamil and who looks like Amit Verma? Yeah. Now that's luck. That's luck. Right. So this casting process took a lot of time to fill each role, lot of time matching it with the real person. And uh, back in those days, you didn't have too much data. Now you have Facebook, Insta. I mean, there are 1,000 pictures that you can judge by. Back in the day, we didn't have much, so we went by bad Right. photographs, but doing the best that we can. And I think we landed reasonably close. फॉर अस टू सी कि भाई एक फाइनल रिजल्ट हमें पता था, लेकिन उस तक वो 90 दिन उस हंट के कैसे थे, that's going to be really really close to our hearts. So thank you so much for getting this series to us, and I wish you all the luck for it, for its Thank success. you. And Nagesh, please keep telling these amazing stories because I'm a fan and I'm sure मेरी तरह बहुत सारे लोग fan हैं. So wish you health and wish you good luck, and thank you so much for talking to me. My pleasure, Nidhi. Absolute pleasure. Thank you. Have a great So day. bye. Thanks, you too.